Now Professor Shukla is requested to start his lecture. You can continue in दे दीजिए. अच्छा ठीक है, बोलो आवाज. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. करुणा शीतलहृदयं पय्यापज्योतविहतमोहतमं सनरामरलोकगरुं वन्दे सुगतं गतिविमुक्तम्. परमादरणीय डॉक्टर बालेश्वर जी, मौर्या जी तथा शिक्षक गण एवं हमारे श्रोतागण, आज एक ऐसा विषय है जो ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, हमारा मन चित्त किस किस प्रक्रिया से होकर गुजरता है और तब मुझे पूर्ण ज्ञान होता है, और अधूरा ज्ञान क्यों रहता है. हम किसी चीज को भूल भी जाते हैं और किसी चीज को भूलते नहीं हैं. So it is a process of cognition, thought of the process of cognition, the consciousness passing on different stages, how knows the object, particular object. So there are certain assumptions. What we everybody know that there are 6 organs, indriyas, faculties: chakshu, eye, throat, ear, nose, heart, jihva, separate, kai, touch, and mind, man. Whenever the matter, rope, which had some fixed shape, first of all, you should know, unless and until no object is before the mind, the state of mind is calm and quiet, like a water of the pond. In the pond or river, wherever
you see the water, when there is calm and quiet, if you take a piece of brick and throw on the level of that water, there is a vibration. So that vibration, the calm and quiet state of our mind is called bhavang. Technical term, bhavang. Peaceful, calm and quiet of a state. And when it is vibrated, it is just like bhavang chalana, the vibration in the mind. And thereafter, our five faculties, eye, ear, nose, tongue, body, mind, aware. Five adverting consciousness. That is, five adverting consciousness. Panchadwara Vajjana. We know technical term Panchadwara Vajjana. Panchadwar, Chakshudwar, Shodwar, Ghandwar, Jivadwar, Kayadwar, Mandwar. 6. So whenever there is a touch between the object and I, then after Panchadwara Vajan, the object is decided that object belongs to what faculty? Which faculty? Which indriyas? Either eye, nose, ear. The eye object is called roop. Suppose glass, there is a glass. The eye, there firstly, there becomes a touch between the eye and the glass. Thereafter, Chakhu Vihar, eye consciousness arises. That bhavang, chalan, bhavang viched, that ends there. 3 moments, 3 thought moments. One thought moment is 3 sub moment. Upad, arising, stay, sthiti. Some moment equal thought moment. And thought moment. तो भी गोद में लेकर के करना पड़ेगा. अच्छा, अब थोड़ा हिंदी के भी विद्यार्थी होंगे, मैं हिंदी में भी बता ताकि वे लोग भी थोड़ा सा. ठीक है, कुछ कल थे मुझे पता नहीं था. सही के बराबर है, इसलिए मैंने कल लगा दीजिए, तब तो सबसे उत्तम है. भी नहीं पड़ेगा, झुकना भी नहीं पड़ेगा. देखिए, ये 6 इंद्रियां
चार्ज में है सर। इसका बैटरी इससे पहले लगा ये चार्ज होता है। ठीक है ठीक इसका बैटरी है। यहाँ से बोले ना। सर कहीं से हाँ ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। तो 6 इंद्रियां होती हैं और सबों का अपना अपना विषय होता है। वो जो विषय है क्या है? रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श। और मन का विषय क्या है? धर्म। धर्म जो ज्ञात विषय होता है, पूर्व से ज्ञात विषय होता है, वही मन का विषय होता है। अब जब चित्त मेरा, आपका चित्त बिल्कुल शांत प्रवाह में रहता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, जिस प्रकार किसी तालाब या नदी का जल बिल्कुल शांत है और उसमें एक ईंट का छोटा टुकड़ा भी हम फेंकते हैं तो उसमें एक प्रकंपन होता है। तो जो शांत भाव है जल का, वो हमारे शांत चित्त की तरह, शांत मन की तरह है। और जो प्रकंपन हुआ वह क्या हुआ? वो वाइब्रेट जब माइंड किया तो भवंग चलन कहते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है। इसके बाद क्या होता है? भवंग चलन के बाद वो तुरंत उसका विच्छेद हो जाता है। इसमें प्रत्येक में एक एक चित्त क्षण लगते हैं। वन थॉट मोमेंट, ईच स्टेप टेक्स वन थॉट मोमेंट टू कंप्लीट इट्स प्रोसेस। Thereafter, bhavang path, disappearance of the bhavang. Thereafter, 5 faculties, 5 indriyas aware. What happened? Then the object, पंच द्वारा वज्जन जिसको कहते हैं, पाली टर्मिनोलॉजी है पंच द्वारा वज्जन, 5 फैकल्टीज। अब वहां 5 फैकल्टीज, यह भी पंच द्वारा वज्जन भी, it takes also one thought moment, and when it is decided that it is the object of the I, then I takes the object and there happens a touch between the two, I and the I object, roop, matter. And whenever it happens, there arises a I consciousness, चक्षु विज्ञान, चक्षु विज्ञान जिसको कहते हैं। विज्ञान ही जानने की प्रक्रिया बतलाती है। विज्ञान से ही हम कोई प्रक्रिया को जानते हैं, पूरा करते हैं। तो वो आई कॉन्शियसनेस arises. Thereafter, चक्षु विज्ञान विषय, एक चक्षु विज्ञान या चक्षु विज्ञान, आई कॉन्शियसनेस. Then mind accepts. Oh, it is the mind, it is the object of mind. And taking, receiving the object of mind is called sampatichana, receiving consciousness. That is called receiving consciousness. Whenever there happens a touch between the I and object,
there arises a I consciousness, and it is decided that it is the object of the I. Thereafter, mind takes, receives the object. It is called sampatichana chitra, receiving consciousness. Receiving consciousness. And receiving consciousness, after receiving the object, mind transfer the object to the investigating consciousness, santirana, chit, receiving consciousness. Panchadwara Vajjan, 5 faculties takes one thought moment. Chakhu Vihar, I consciousness takes one thought moment. Sampatichana, receiving consciousness takes one thought moment. And investigating consciousness, santirana chit, takes one thought moment. Thereafter, who will decide? Othapana, deciding consciousness. Oh, it is the object. How it is, what it is, whether it is useful or unuseful. If it is useful, mind accepts. And when it is unuseful, it rejects. When it is useful, then mind, javan, chit arises, consuming consciousness. Javan means what? Going fast. And consumption also, consume. Javan means. Then mind uses the object. After it takes thought, 7th thought moment. After consuming, in course of consuming the object, mind takes 7 thought moments. 7 thought moments. After 7 thought moments, mind decided. During the course of consumption of the object, there happens a registration of the object in the mind. How it is. It is good, it is consumable. Then the shape and every relevant things regarding the object is registered in our mind. So, it takes 2 thought moments. During the course of registration of the object in our mind, 2 thought moments passes, and thereafter it subsides. So, when the object appears before the 5-door Panchadwara Vajjan, 5-door adverting consciousness, from 5-door adverting consciousness to the registering consciousness, deciding consciousness, it takes how many thought moments? How many thought moments? 9. गिनिए. 2 thought moments. 7. कुछ तो ठीक है.
देखिए कितने हुए, पंच द्वारा वजन से ही गिनिए। भवंग 3 को, वो प्राइमरी स्टेजेस है, प्रारंभिक स्टेजेस है। पंच द्वारा वजन 1, चक्षु विहार 2, 3, हाँ, ओठपन, ठीक। हाँ, कितना हुआ? 7। कितना हुआ? चेतुपादा, सत्यव चेतुपादा चतुर्दशा। ये चतुर्दशा मैंने 14 चित्त क्षण लगते हैं। कैसे? गिनो। पंच द्वारा वजन, संपत्ति, चक्षु विहान, संपत्तिक्षण, संतीर्ण, उठपन, जवन, जवन 7, 7 थॉट मूवमेंट, चेतु पादा दशेरिता। कितना हुआ? चतुर्दशा 14, 14, 14 और तदालंबन में 2 चित्त क्षण। वो 2 चित्त क्षण लेता है थॉट मूवमेंट 2, तो नहीं कि नहीं? अरे 7, 5, 12 तो ऐसे ही हो गया, और 2, 14 है। हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, वो जो 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 प्रोसेस है ना, जो उसका टेक्निकल टर्म है, उस टेक्निकल टर्म में टेक्निकल टर्म में ऐसा है कि पंच द्वारा वजन, चक्षु विज्ञान और संपतिक्षण, संतीर्ण और ठपन 5 है, और जवन 7, तो 7, 5, 12 और 2 तदालंबन 14, 14 थॉट मोमेंट्स पासेस। सात ना, यवन 7 टाइम्स, जवन 7 टाइम्स, छठवा की बात नहीं है। Whenever the object enters into the avenue of mind, the object enters into the range, avenue of our mind, and the course is completed, that stands, it takes 14 thought moments, then it would be a complete knowledge of the object. Sometimes that is called Ati Mahant Alamban. Very great. And if that course of thought, knowing course of thought ends at Jawan, and there happens no registration in the mind,
then Mahant Alamban. Not complete, great object. And if the course of thought course, the course ends at Othapana, that would be Parit, light object. Light object, Parit Alamban. Ati Parit, if it the course ends at Chakhovyar Parit. So it is a 5-door thought moments. Panchadwar Vithi. It is called Panchadwar Vithi. 5-door process of knowing. Thought process of cognition or knowing the object. Vithi. It is called Panchadwar Vithi. There are two terms, technical terms, Chitta Vithi and Vithi Chitta. So Chitta Vithi, the thought process of knowing, cognition. And Chitta Vithi, Vithi means process, way, the thought process of knowing the object. 5 thought process of knowing the object, that is called Panchadwar Vithi. Vithi chittani satte chitu pada chaturdasa. 7, ये moment पास किया. 7, Panchadwara Vajjan, from Panchadwara Vajjan to Tadalamban, registering consciousness. 7 thought moment. It is these 7 thought moments is called Vithi Chit. It is called Vithi Chit. That is previously what I told, Chitta Vithi. And in course of thought process of knowing the object, what happens? The steps comes are 7. Okay? No. You don't understand. No. You know English or Hindi much more. Hindi. English. You don't understand. What I told you, do you understand? What I told you, do you understand? Oh, in English. What I थोड़ा थोड़ा तुम तो टीचर हो ना जी, यहाँ स्टूडेंट हो, लेकिन यहाँ विभाग में तो टीचर हो. एपिडेमियोलॉजी तो पढ़ी होगी, हम नहीं पढ़े हैं. तो ये 5 डोर कॉन्शसनेस हुआ. अब हमारे हिंदी के विद्यार्थी जो हैं, इंग्लिश में मैंने बताया 5 door thought process of knowing, cognition. In course of process of knowing, 7 thought moments, there are 7 thought moments. 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 7 thou
thought. So seventh thought, what that is five-door adverting consciousness. Thereafter, I consciousness arises. Thereafter, receiving consciousness arises. After receiving consciousness, investigating consciousness, examining about the object consciousness, and after receiving, investigating consciousness arises. After investigating consciousness, deciding consciousness arises, what it is. And after deciding consciousness, the mind consumes the object. It takes seventh thought moment, that is javana. And thereafter, registering consciousness arises, that is tadalambana, chitta. Okay? When the object enters into the avenue of the thought, if the thought process completed, passes on through seven thought moments, it means you know the object in detail. And if it ceases, if the process breaks at different stages, then you could not acquire the perfect knowledge about the object. It is the five-door thought process. पंचद्वार विधि में सात चित्त क्षण होते हैं. पहले चित्त की जो अवस्था है, जब तक कोई विषय उपस्थित चित्त के सामने नहीं रहता है, तो चित्त शांत भाव से प्रवाह रहित होता है. और जब कोई वस्तु हमारे सामने आती है, तो हमारे चित्त में एक प्रकंपन होता है. What happened? क्या हुआ? क्या बात है? इसके बाद वो प्रकंपन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है. और वो कैसे समाप्त हो जाता है? समाप्त हो जाता है तो कि ये हमारी जो इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां जो है, चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय, जब यह डिसाइड हो जाता है कि चक्षु का विषय है, तो पंच द्वारा वजन मैंने क्या होता है? फाइव डोर एडवर्टिंग कॉन्शियसनेस, जिसको कहते हैं पांचों इंद्रियां जागरूक हो गई विषय की ओर. ये क्या है? जैसे चक्षु का विषय क्या है? रूप है, मैटर. श्रोत का विषय क्या है? शब्द. घ्राण का, नोज का विषय क्या है? गंध. जिह्वा का विषय क्या है? रस, सैपिड. एंड और बॉडी का विषय क्या है? टच. तो जब ये पांचों ऑब्जेक्ट ये डिसाइड हो जाता है, तब वो प्रोसेस प्रक्रिया जब पूरी होती है, और पंच द्वारा वजन, चक्षु विज्ञान, जब रूप और चक्षु विज्ञान में स्पर्श होगा, तो रूप और चक्षु में स्पर्श होगा, तो चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है. विज्ञान जानने की प्रक्रिया को कहते हैं, जानने के तरीके को कहते हैं. कैसे कोई जानेगा? जैसे विज्ञान है ना, उसी रूप में वह भी काम करता है. तो
यह प्रक्रिया जब शुरू होती है, चित्त की प्रक्रिया, तो पंच द्वारा वजन से प्रारंभ होकर चक्षु विज्ञान विषय से, जब रूप आलंबन से चक्षु का स्पर्श होता है तो चक्षु विज्ञान, चक्षु विज्ञान क्या करता है कि फिर वो अपने ऑब्जेक्ट को दे देता है रिसीविंग कॉन्शसनेस को, संपत्ति क्षण चित्त उसको कहते हैं, इंग्लिश में उसको रिसीविंग कॉन्शसनेस कहते हैं। और वो रिसीव करके क्या करता है, रिसीव करके रखता नहीं है अपने पास, रिसीव करके, हाँ, वो संतरण, इन्वेस्टिगेटिंग कॉन्शसनेस, एग्जामिनिंग द कॉन्शसनेस, वो उसको उस ऑब्जेक्ट का एग्जामिन करता है कि वेदर इट इज गुड और बैड, वो एग्जामिन करेगा, लेकिन डिसाइड जो करेगा वो ओठपन है, डिसाइडिंग कॉन्शसनेस। तो वो ओठपन, डिसाइडिंग कॉन्शसनेस, वो डिसाइड करेगा कि यह उपयोग के योग है कि नहीं है, काम के लायक है कि नहीं है। तो यदि काम के लायक है, उपयोग के योग्य है, तो उसका उपयोग कौन करता है, जवन चित्त उसका उपभोग करता है। कहिए, जवन शब्द जो है क्या शाब्दिक अर्थ होता है वेग से गमन, शाब्दिक अर्थ जवन का होता है वेग से गमन, लेकिन टेक्निकल शब्द है तो इसका अर्थ है उपभोग करना, उपयोग करना उसका। जब उपयोग करने का जवन कॉन्शसनेस उसको कहते हैं, तो वो इसके पहले जितने हैं स्टेप्स, पंच द्वारा वजन से लेकर और ठपन तक, प्रत्येक एक एक क्षण लेता है, चित्त क्षण लेता है, 1 थॉट मोमेंट्स। तो 5 थॉट मोमेंट्स हो गया। जब यहां तक वो ठपन तक 5 थॉट मोमेंट्स हो गया, तो उसका जवन जो है, इतना जल्दी उपयोग के योग्य कोई वस्तु है तो उसको इतना जल्दी नहीं छोड़ देगा ना, उपयोग करेगा उसका। तो उसमें 7 चित्त क्षण लगते हैं। अरे किसी चीज का जब उपयोग करते हैं, अच्छी किताब मिलती है किताब की दुकान पर, तो उसको हम देखते हैं ना, तो देखते हैं कि कैसी है, काम के लायक है कि नहीं है, कि काम के लायक है तो और उसको थोड़ा कुछ मिलता है तो देखते हैं, काम के लायक रहती है तो ले लेते हैं कि ये किताब ठीक है। तो जवन हो गया ये ठीक है, तो वो तदालंबन चित्त को दे देता है रजिस्टरिंग कॉन्शसनेस। तो उसका सेप, उसकी विषय सूची, इन सबों का यूजफुल है कि नहीं है, ये सब डिसाइड कर लेता है, तो उसको रजिस्टरिंग कॉन्शसनेस कहते हैं। इस तरह से यह प्रक्रिया पूरी हुई। जैसे मान लीजिए, एक मैं उदाहरण के द्वारा, वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, बाय एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली। हम चीनी की चाय नहीं लेते हैं। बागीचे में एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति सोया है। इन द गार्डन, on the below the mango tree, one man is sleeping. Of that mango tree, there are many mangoes, fruits are there, and one person is sleeping, covering our head. In the meantime, during the course of sleeping, one mango
drops nearby him. Oh, what happened? What happened? Then he removed the cover from the face and he takes the eyes. See the mango. Oh, it is mango. It is ripe. पका हुआ है. Thereafter, he takes the mango and oh, it is good. Thereafter, cuts the mango by his teeth and he feels, oh, it is sweet, so sweet, it is good. So, what happened during the course? The man is sleeping. That shows bhavang. Drops bhavang chalan. Good. And thereafter, then 5 door adverting पंचद्वारा वचन. भवंग चलन समाप्त हो गया. After looking, seeing the mango, भवंग चलन ends. Vibration of the mind ends. And this is, oh, it is a mango. Then 5 door adverting consciousness arises. It is just like 5 door. It takes and 5 door adverting consciousness gives that matter to the eye consciousness. Chakshu Vigyan. Oh, that good mango is lying just beside him. And that mango is when he takes, that is receiving consciousness, and after receiving consciousness, he looks, oh, it is ripe. पका हुआ है. It is Santirana consciousness. After receiving by the hand, he tears the mango from his teeth of the mouth. पका हुआ है. It is decided, or thapan consciousness, deciding consciousness. And after deciding consciousness, consuming javan, thought moments arises, and he is eating. He eats the mango and feels sweets, and thereafter registering consciousness registered. Okay, do you understand? By example, it is the example of the 5 door thought process. So, likewise, it is 5 door objects, Rupa, Sabda, Gandha, in any object, it is applied. You can apply in taking any object. For example, that matter and Rupa is taken here. Then Manodwar Vithi. In that Panchadwar Vithi, 7 thought moments, 7 Vithi Chit, and 14 times thought moments. Thereafter, Manodwar, 2 types of Vithi, Chitta Vithi,
पंचद्वार भी थी एंड मनोद्वार भी थी. मनोद्वार भी थी, माइंड डोर प्रोसेस. In mind door process, the object, no object appears before the mind. Whatever we know earlier, the object of the mind is Dhamma, is called the Dhamma. Dhamma, Dharma does not mean that Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism. Dharma does not mean only this. So the things about what we know earlier. ना ठीक है, अब जो बोलना होगा यही से बोलकर समाप्त करूंगा. तो ये हाँ, वहां से बोलने में थोड़ी हमको सहूलियत होती है, क्योंकि अब देखिए एज बढ़ने पर पैर भी ठीक नहीं काम करता है, कमजोर हो जाता है, शरीर भी, दिमाग तो कमजोर हो ही जाता है, बातें भूल जाती हैं, ये सारी समस्याएं आती हैं, सबके साथ आती हैं. तो माइंड डोर में जब मन का विषय उपस्थित होता है तो मनोद्वारा वज्जन उसको कहते हैं. मन कहता है अरे ये क्या है, व्हाट इट इज, वी नो नॉट इट. मनोद्वारा वज्जन, mind adverting consciousness, adverting consciousness of mind. Thereafter, Javan, only 3 thought movements. Vithi chittani tini. They are in 5-door consciousness. Vithi chittani sattva. है ना, टेक्स्ट है तो उसमें होगा. विथि चित्तानि तीने चेतो पादा दशेरिता, 10 थॉट मोमेंट्स. हम तो किताब भी नहीं लिए हैं बेटी, भूल सकते हैं. जी, तो ये उसके बाद जवन, कंज्यूमिंग कॉन्शियसनेस, and it transfers to Tadalamban, registering consciousness of the Lord. Suppose, by one example I am telling you, so that the things would be more clear. On the platform, railway platform, you are looking many persons, but one man is standing. You are thinking that, oh, I know that man. I have seen, I know, but you did not recall, could not recall who he is, what is his name, and where did I met him. You are thinking that is the Manodwara Vajan. After Manodwara Vajan, if it subsides, the train comes, and if you know, oh, that man is that person, but you are not confirmed about the man. So, only after Javan ends, there is no registration about the man.
And when the registering consciousness, suppose you know detail Tadalamban text, registering consciousness is completed. Thereafter, you know about the mind. So, the object of the mind is fully known through the completion of the mind door process. So, मनोद्वार विधि और पंचद्वार विधि. पंचद्वार विधि, मनोद्वार विधि, two types of विधि. One thing, one is अपना विधि. अपना विधि in text हो. You see? हम भी भूल जाते हैं बेटी, है कि नहीं? जरूर होगा. ये विभावनी अभिधम्मत संगोह की विभावनी टीका के साथ आप लोगों को उपलब्ध करा दिया. बालेश्वर जी ने. सो जो आलंबन माइंड डोर कॉन्सेप्ट में है, वो आलंबन जो होता है, एक होता है विभूत आलंबन और अविभूत आलंबन. तो when the process is completed and ends at tadalamban stage, resting consciousness, that is called vibhut alam. Clear, clearly, you know, clearly about the man. And if you were not, if it ends at javan simply, then it you don't know fully and you cannot recall. So there is a apana vithi. One apana vithi, process of absorption. Process of absorption. हम हट जाते हैं इधर उधर ना, ये इसलिए इसको पकड़े रहे, ज्यादा ठीक है. तो प्रोसेस ऑफ ऑब्जॉर्प्शन में क्या होता है? किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए एक प्रोसेस होती है. तो उसमें कामावचर चित्त आप लोग पढ़े हैं ना, कल भी पढ़े हैं, आज भी देखे कि फर्स्ट चैप्टर पर ही कुछ बोल रहे थे हमारे प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार जी. तो उसमें 29 चित्त, कामावचर चित्त 29 चित्त लगते हैं. कैसे 29 चित्त? तो कामावचर अकुशल चित्त 12, immoral consciousness, unwhole sensuous sensuous consciousness 12, and wholesome sensuous consciousness 8. The 12 plus 8. Then 29 takes how? 5 रूपावचर consciousness and 4 arupaavachar consciousness. Thus 29 types of consciousness in the process of absorption. 29 types of consciousness passes on through in the mind. And there is apana is just like a mind flow, प्रवाह जिसको कहते हैं, mind flow of mind. ये कामावचर जो चित्त है, यदि यान संयुक्त संप्रयुक्त होता है with knowledge, associated with knowledge, if kamavachar akusal chitta is
associated with knowledge, then what happens? A thrill of pleasant feeling comes. How? Knowledge, that process flow, the thought flow, the process, if the mind is associated with knowledge about the object, then you feel you will feel not happiness, unhappiness. Why so? Because दिट्ठी संपयुक्त 12 से कामावचर कुशल चित्त जो होते हैं वो दिट्ठी फॉल्स व्यू से युक्त होते हैं. तो जब फॉल्स व्यू क्या है? दिट्ठी का अर्थ देखिए टेक्निकल टर्म में लोग दिट्ठी का अर्थ क्या कहते हैं? मिथ्या दृष्टि. अर्थात 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का वर्णन जो ब्रह्मजाल सूत्र में आया है वह यहाँ पर दिट्ठी नहीं है. दिट्ठी का अर्थ मिच्छा दिट्ठी है. क्या मिच्छा दिट्ठी है? तो काम भोगों में वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि, यहाँ सेंसुअस चीजों में के उपयोग में आनंद लेना. A pleasant feeling in course of using the object which is harmful, but due to the false view he is not able to understand what is happening. He is feeling happiness. So manassa sahagatam ditthigata sampayutam asankharik mekang. That is, asankharik mekang means what? Without any promptness, without promptness, prompted by others, inspired by others. If you are using self, then asankharik. Then prompted by others, sasankharik. You are doing so. So therefore, not happiness, it is unhappiness. You will feel unhappiness. Unhappiness, but somanassa. Unhappiness, but somanassa. You should feel unhappiness, but you are feeling happiness due to false view. This is the ditthigata sampayutam asankharik mekang sasankharik. 2 types का. इस तरह से in this way there are 12 types of akusala चित्त अपना विधि में and 20 types of kusala चित्त ज्ञान संपयुक्त with knowledge. Likewise रूपावचर चित्त knowledge. There is no knowledge. What knowledge? रूपावचर 5 ध्यानांग factors वितर्क विचार स्मृति सुख एकाग्रता. Arupavachar, that is also a meditative consciousness, and Akash, Vigyan, nothingness, like that. So that is Apanavithi, a flow. It passes on through the 20 types of consciousness, and one that is Apanavithi. There is a Javan consciousness. In Apanabhithi, no Vibhut or Abhibhut Alamban and Tadalamban. At Tadalamban, अहेतुक चित्त आप लोग पढ़ाए होंगे रूटलेस कॉन्शसनेस. तो रूटलेस कॉन्शसनेस मीन्स व्हाट? अहेतुक चित्त. अहेतुक विपाक चित्त, फल चित्त,
कुशल विपाक अहेतुक चित, अकुशल विपाक अहेतुक चित. The hetuk means the consciousness which is not associated with any one of the six roots, not by lobha, dosa, moha, or alobha, dosa, moha. So it is not associated. It is literal. If it is not associated with any roots, then why it is mentioned kusala vipaka hetuk chit, akusala vipaka hetuk chit? Why so? Kusala kusal. The root makes kusala or akusal. Immoral roots, unwholesome roots makes the consciousness wholesome, and the wholesome consciousness, wholesome roots makes the consciousness wholesome. If they are not associated, any one of the associated, because it is vipaka chitta, resultant consciousness. So ahetuk, kusal vipak, akusal vipak. Ist alambha types of object appears before the mind. One desirable object. Ist alambana. When desirable object appears in the mind, then kusala vipak hetuk chit. Desirable. If undesirable, dukha sahagat. Desirable, sukha sahagat, kusala vipak hetuk chit. Undesirable, anitya. When the anitya is associated, object is undesirable, then dukh sahagat kusala vipaka hetuk chit. Do you understand what I am telling? इंग्लिश. अब देखिए, इसमें एक अपना विधि भी है, पंचद्वार विधि, मनोद्वार विधि, अपना विधि. तो अपना एक चित्त का प्रवाह, एक स्रोत की तरह चलता है. जो चित्त का एक स्रोत है, प्रवाह है, उसको अपना कहते हैं. और उस स्रोत में वो एक भवंग स्रोत कहिए, वो चलता है, भवंग की स्थिति में चलता रहता है. तो उसमें जो ज्ञान संयुक्त कामावचर जो चित्त होते हैं, उस प्रवाह में 29 टाइप्स ऑफ 29 प्रकार के कामावचर, कामावचर ही केवल नहीं, 29 प्रकार के चित्त पासेज होते हैं. तो 29 प्रकार के चित्त में 12 अकुशल चित्त और 8 कुशल चित्त, 5 रूपावचर चित्त और 4 अरूपावचर चित्त, ये चलते हैं. तो यदि इस आलम्बन में, इसी को हम कहते हैं अपना विधि. कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं किसी विषय को, तो किसी विषय को ऑब्जर्व करने में ये जो 29 कॉन्शसनेस है, 20 कामावचर, 5 रूपावचर और 4 अरूपावचर कॉन्शसनेस passes through. And तदालंबन में 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 प्रकार का होता है. एक इष्ट आलंबन होता है, जो मैंने कहा है आप लोगों को इंग्लिश में. एक इष्ट आलंबन होता है जो चाहते हैं, डिजायरेबल. एक होता है अनिष्ट आलंबन, एक होता है अति अनिष्ट आलंबन. तो जो, या अति इष्ट आलंबन. तो जो अनिष्ट आलंबन है, कुशल विपाक अहेतुक चित्त में, आपको क्लास में पढ़ाया होगा, या लड़के सोचते हैं कि जब रूट पूछते हैं प्रायः, कि जब किसी रूट से, किसी हेतु से चित्त सब प्रयुक्त ही नहीं है, तो इसीलिए हम अहेतुक कहते हैं. तो दुख सहगतं काय विहारं क्यों कहते हैं? अकुशल विपाक दुख सहगतं काय विहार क्यों कहते हैं? वहां दुख सहगत होगा अनिष्ट आलंबन के कारण है, और
सुख सहगतं काय विहारं क्यों कहते हैं? इष्ट आलंबन के कारण। समझे? तो यही आपको चित्त विधियां है। ये तदालंबन का भी नियम उसमें है, वही जो इष्ट अनिष्ट बतलाया। एनी डाउट? तदालंबन का तदालंबन क्यों? उसमें मैंने बतलाया ना तुमको बेटी, इष्ट अनिष्ट आलंबन का। हाँ, इसी, नहीं नहीं, इसी क्या आता है। मनोवियान, माइंड और कॉन्शसनेस। हाँ, मनोवियान, मनो द्वारा वजन, मनोवियान नहीं, मनो द्वारा वजन उसका टेक्निकल नाम है। द्वार, मनो द्वारा वजन, एडवर्टिंग कॉन्शसनेस, माइंड और एडवर्टिंग। कोई प्रश्न? कोई? तेरा पानी पूछो पूछो। अभिधम्मत संगहो का यह चौथा चैप्टर था जिस पर गुरुजी का आज व्याख्यान हुआ। इस चौथा चैप्टर का नाम है विधि संगह विभागो। यह आज पूर्ण हो गया है। इस पर अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन इंटरैक्ट विथ प्रोफेसर शुक्ला। उसका अंकन, अभिलेखन हमारे मानस में पूर्ण रूप से हो जाता है। तो अभिलेखन कहो, तदालंबन का अर्थ। अभिलेखन, अंकन, ऑब्जेक्ट के बारे में पूर्ण रूप से जो प्रोसेस में हम समझे, उसका हमारे दिमाग में एक खाका बन गया, तैयार हो गया। हम रजिस्टरिंग कॉन्शसनेस, इसीलिए उसको कहते हैं ना रजिस्टरिंग कॉन्शसनेस। पूछो 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 पूछो, तुम पूछो ना, पूछो, क्यों तक रहे? ना, फिलोसफी वाले भी पूछ सकते हैं। क्या? कौन कौन नाम? रूप न, विधि का। देखो भाई, विधि का अर्थ क्या होता है अभी नहीं जाने? इतना पढ़ाई पढ़ गए, विधि का अर्थ नहीं जाने? तू पाली का विद्यार्थी हो ना। विधि का फिलोसफी? ओ अच्छा, आप फिलोसफी के हैं। अच्छा, तब तो पूछना स्वाभाविक है। विधि का अर्थ होता है रास्ता, मार्ग, प्रोसेस। समझे? यू यस। The process is when we say, when
my question is, this process exists if we sleep or not? If we sleep, we have dream, right? Sometimes we have dream. So this process, this kind of process, happen or exist or not? First, and second, Breaks if I have two questions. Sir. Okay. oh, The second is after Bhavanga. So the total is unlimited. Okay, just like a circle. And before Bhavanga, what the stage? Bhavang is the initial first stage. So this is Bhavanga. Bhavanga is like a calm and then like a Calm, calm and quite a state of mind. Okay. And before Bhavanga, what stage? Yeah. So my question is, first, this process happen or not? And then before Bhavanga, what the stage? Just if you are sleeping, your bhavang is not sleeping. Your mind is completely cool and calm. How? Dream. Oh. अच्छा क्वेश्चन है. Even though it's not that strong, right? Sometimes, especially Manodwara sometimes open even though we are sleeping. And then, how about this? Is the same process or how the experience? No, in dream that process does not start. What you have thought about in the daytime and what you have done in the daytime, that will the shadow of the bhavang, the shadow of the process comes in your dreams. If the process starts to know any object, and if you are dreaming about the thing, what you have taken in your thought process and not completely, you have not, that process is not completed, then you will see in the dream. If the process is completed, you cannot dream about that object. So we still have a process, still have a process. Yes. So if I say in this In the at the stage of sleeping, bhavang is calm, and not only at the sleep. If you are alone in the room and you are not thinking, in a sinking, completely calm and quiet, no object before you before the mind, that your mind is calm, and that is bhavanga. And before taking the object, that is bhavang. And before bhavang, there is a subsides. That bhavang subsides. Actually, that bhavang means what? Bhav means world, sansar. Whenever, unless and until the mind is alive, his bhavang is alive. Only bhavang is activated when object comes and when you start to think about anyone. Then it starts. And after the death, that bhavang ends. Chit, at the death of time, chuti chit and patisandhi chit. What chuti chit is called bhavang.
Viched. Bhavang, viched. It means our mind is completely subsides forever. Then new Patisandhi with the birth, with the in the womb of entering, in the womb of mother, entering the consciousness in the womb of mother. That again starts after some times. At the time of death, that bhavang ends. Bhav means world, bhav means being. क्या पूछा? हाँ? Past bhav. अतीत भवंग, अतीत भवंग, पास्ट भवंग, अतीत भवंग. वो अतीत भवंग. Past bhavang is what whenever the process is not of the object has not come before the mind. That is previously the mind is the cool and calm state. Bhavang chalan starts. Bhavang, so that is atit bhavang, which ends, giving to activate and to give rise the bhavang chalan. Before vibration in the mind, the state of mind is called bhavang. So that is atit bhavang, and it is bhavang chalan. Then bhavang viched, after taking the object by the five-door consciousness, adverting consciousness, then the bhavang ends. Yes. Good question you are asking. When the first time we have bhavanga? When the first time we have bhavanga? First time. First time we have bhavanga. You said bhavanga is the life continues, like Patisandhi and then bhavanga, right? And then when the first time we have bhavanga, because when we in our mom, and then when the first time we have bhavanga, when we were born in the first time, or when we still in our mom's tongue. क्या पूछ रही है? Yeah. Oh, just I told you that after entering Patisandhi linking consciousness. Patisandhi linking consciousness. From just in the womb of a mother. In the womb of a mother. And after sometimes, some months, that bhavang, when there is a life, there happens, there becomes a life arises in the womb of a mother, then there starts bhavanga. With the arising of the life, in the womb of a mother, just you see, if the baby is growing, you feel, your mother feels, there is a movement in the womb of a child. What? There is a bhavang. Womb of a mother. We have already bhavanga. Already bhavanga. What? You asked? You said bhavanga is the life continuous. Before, Life continuum. Life continuum. Chuti, after Chuti Chitta Patisandhi, the linking consciousness. Huh? That is Chuti Chitta. New life.
begins. ओ चाय कहिए अब वो बता रहे थे वो जोड़ता है ना वो तो लिंकिंग कॉन्शसनेस लिंकिंग कॉन्शसनेस ये अच्छा क्वेश्चन है rebirth एनीथिंग मोर काली कलर के बनते जी आप कुछ पे पूछ रहे हैं क्वेश्चन है जो आप लोग पूछने के अल्टरवाइज English term for vowel. English term for the vowel. इंग्लिश English term for the vowel. that is a state of mind a state of mind come and quick But and by the basic consciousness, if you are seeing a state of consciousness, it's known as vowel. But you are also seeing that by the right hand, then the vowels, this vowel becomes. But we know that also that instead of people, the state of consciousness continuously moves. The consciousness जो हमारा मन चित्त है वो हमेशा मूव करता है आपको पता है तो आपने बताया कि vowel जब हम लोग को जब when person dies at the end of the vowel but the vowel means the state of consciousness the state of consciousness का present होता है तब जब चलते रहते हैं तो vowel किसके end होते हैं होंगे के एंड कहा हुआ होंगे दैट इज द स्टार्टिंग जब आदमी चेंज चुप्पी चेत यस भवंग विच्छेद पैदा हुआ तो भवंग उसका Disassociation, एसोसिएशन the consciousness at the last thought moment dissociates from one life and it goes into the womb of a mother for being patisandhichit, that is linking consciousness for the start of new consciousness. Yeah. How the children attain knowledge, the attainment of knowledge. So this the question is when you are Arupa Bhumi, how one will attain knowledge because these things according to our that process will go because there is no object to focus on all this. There is a object of mind. No. In Arupa Bhumi, 4 objects. That actually that is a Rupa Bhumi and Arupa Bhumi. Both are meditative consciousness. So Rupa Bhumi, when at the fifth stage of the Rupa Bhumi, the meditator thinks, because during the course of Rupa Bhumi, practice of Rupa Bhumi, he simply his mind on any Rupa object or formed object. But it came to his mind that it is not possible to get Nibbana, to get freedom from the worldly affairs, worldly link. So therefore he enters into the Arupa Bhumi. And in Arupa Bhumi, 4. 1, Akasa nahi Chaitanya, a space. He concentrates on his space. He concentrates on the space. Suppose Akas, suppose hole in our or hole or on the vacuum of the room.
Thereafter he thinks, oh, it is nothing. Our mind appears like whole, like a space. Then he give up that Akash, and then dhyana mein chaitanya, consciousness. He concentrates his mind on his own consciousness. Thereafter, gradually, his consciousness becomes pure. But still he is not completely from the world circle. So, mindness did not, nothingness of the mind. Gradually he improves his concentration of mind and on nothingness. Thereafter, neither feeling nor neva sanya na sanyayatan, nor any object. And there is object before his for concentration. But still he is not feeling free from the world circle. Thereafter, because five fetters, five fetters joining consciousness, joining factors that are called sanjojana, sanjojetiti. That joins with the world. They are existing in his mind. So, in order to destroy those 10 factors, he enters the Lokuttara, supramandan sphere. And 10 sanjojans, Sakayaditthi, false view, and the belief in the false view, believe in the permanent existence of the soul. And Silavat Paramas, faith in fasting, to get purity through fasting or through bath in the Ganges. Silavat Paramas, Sakaya Ditti, Silavat Paramas, Vichikitsha, doubt. Vichikitsha, Kamarag, sensuous desire. Ruplag, desire to take birth in the Rup Lok. Aruplag, desire to take birth in the Arup Lok. Likewise, last is avidya, ignorance. Gradually, the first path of the Lokuttar Bhumi, that is a stream winner, Srotapati Mag. Through Srotapati Mag, the first 3 fetters he destroyed, successfully destroyed. Sakayaditthi, Silvat Parabhas, belief in the purity through taking bath or fasting, and Vichikitsha. The rest 2, thereafter 2, Kamarag, Ruparag, he becomes, the meditator gradually becomes, he make them weak. He makes them weak 2 factors. In Anagami, the rest factors, in Anagami, through Anagami, never returner, he destroyed, after destroying 2 factors, the Sakadagami Mag. Through Sakadagami Mag, the 2 factors are weak, and Anagami,
those 2 factors are destroyed completely, and the rest 5 factors are destroyed through Arahat Marg. If those 10 factors of Sanyojan fetters are completely destroyed, he becomes Arahat. He attained Arahathood. Arahathood, yesterday I told you this Sanyojan is like enemy of the meditator. So, unless and until those are destroyed, they have to take birth again and again. And after the complete destruction of elimination, eradication of those fetters, he becomes Arahat and he is free from rebirth. He will not take rebirth. He is not completely free through world circle, Bhava Parampara. Okay? Rebirth. Anything more? Do you understand? I? No, बोलिए बोलो क्या व्हाट क्वेश्चन पूछने दीजिए इसको 1 मिनट. वो है ना, that object है ना. ऑब्जेक्ट मेडिटेशन वही मैंने कहा ना, स्पेस, nothingness. Nothingness means what? The subtle of the mind, the sukshma, subtleness of the mind, on the mind. Yes, or nothingness is object. Object means something that should be exist. No, there is no object. Only mind, the subtle, what I say, that in Pali, sukshma. The subtle, कैसे कहेंगे उसको? Subtle state of mind. Clear? After that, neva sanya na sanyayata. Sanya means knowing. Ayatan means basis, without any base. Base of the meditation, the practice. And without having any object of meditation, it enters into the. At that 4th stage of Adupjar, he knows that still there are existing 10 fetters, and unless they are removed, they are negated, he will not be, he cannot be free from taking birth. Okay? Okay. So with this, Professor Shukla tried to cover almost all important topics of chapter 4, that is Vidhi Sangha of Abhidhammatthasan gaha. So now you all are invited for lunch, and after lunch at 2:45 we will assemble once again for the next chapter, that is chapter 5, and part first will be delivered by Professor Siddharth Singh ji. The part first of chapter 5, that is Abhidhammatthasan gaha. So he will cover that chapter, and we will assemble here once again at 2:45.